Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is me, Safiullah, and I hope you all will be fine. Today I am going to discuss four things. Number one, language. What is language? Number two, English. Number three, alphabet. And number four, word. What is word? If a person wants to learn English grammar, so first it is very important to learn that what is language. Because of this reason, I am going to discuss language. First, the definition of language: the medium of communication through which we express our feelings and emotions, thoughts and ideas is called language. यानी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपने जज्बात और एहसासात, अपने सोच और फ़िक्र लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं. इसको क्या कहते हैं? इसको लैंग्वेज कहते हैं. कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन जब आप डिफरेंट ज़रा इस्तेमाल करते हैं लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं. तो एक ज़बान के ज़रिए, एक लैंग्वेज के ज़रिए हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं. तो इसलिए ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, एक मीडियम है, जो हम अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात इसके ज़रिए लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. अब इसके पर्पस क्या है? तो अगेन ऑलरेडी हमने डिफिनीशन में डिस्कस किया कि ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, लोगों के साथ कनेक्ट होने का एक बेहतरीन ज़रिया है. दूसरा जो इसका पर्पस है, we take pleasure from learning and speaking it. ये प्लेजर का भी एक ज़रिया होता है. जब आप एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके सीखने के दौरान आप खुश होते हैं कि मैंने कोई नया चीज़ सीखा, और जब आप सीख जाए और फिर इसमें बातें करते हैं तो फिर भी आप खुशी महसूस करते हैं ना, जब आप किसी नई लैंग्वेज में जो है ना बात कर रहे होते हैं. अब जो है ना second one, English. Now what is English? So it is very simple that the language of English people is called English. अंग्रेज़ों के ज़बान को अंग्रेज़ी कहते हैं. It is very simple. For example, if we are going to discuss and define Pashto, so the language of Pashtun people or the language of Pathan people is called Pashto. पश्तूनों की ज़बान को पश्तो कहते हैं. तो इसी तरह अंग्रेज़ों की ज़बान को इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेज़ी कहते हैं. तीसरा जो पॉइंट है वो है अल्फ़ाबेट. व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? द लेटर्स इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स. किसी ज़बान के हरूफ को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. और the things which make words, the things which make word is called alphabet. Now, what are the number of alphabet in English? So there are 26 alphabets, 26 letters in English. The division of alphabet. So there are two types of alphabet. Number one, vowel. Number two, consonants. There are 5 vowels in English: A, E, I, O, U. And the remaining 21 letters are consonants. But on the other hand, one is vowel letter and consonant letter. The second thing is vowel sounds and consonant sounds. So
Vowel sounds are 20, while consonant sounds are 26. The phone number thing is word. What is word? So we need to know about word. The proper and meaningful combination of letters is called word. The proper and meaningful combination of letters is called word. जब हरूफ एक ख़ास तरतीब में इकट्ठे हो जाए और एक माना दे दे तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन. सो ए लेटर एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई है और ये एक माना देता है कि ह्यूमन मीन इंसान, तो इसको हम वर्ड कहते हैं. इसी तरह एजुकेशन and unity. So these are the four things that we discussed in today's lecture: language, English, alphabet, and word. This is enough for today. Next time I'm going to discuss English grammar, parts of speech, and noun. So next time we will see you. Thank you for listening.